फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 9103 द मिनिमम वाटर रिडक्शन अचीव्ड यूजिंग अ सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर इज, ऑप्शन है 20%, 40%, 30%, 10%. करेक्ट आंसर है 20%. नेक्स्ट है, अ 9 मीटर लॉन्ग स्लैब इन कास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ दिस मंथ according to a standard, on which day can the props of slab be removed? Options है 28th day, 7th, 21st, 14th. करेक्ट आंसर होगा 14th. In case of welds using lap joints, the minimum lap should not be less than 4 times the thickness of the thinner part, or TMM, whichever is more, where TMM is, options है 10, 30, 40, 20. करेक्ट आंसर होगा 40. नेक्स्ट है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर अ शिप डॉक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विथ 40 mm एग्रीगेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाई इंडियन स्टैंडर्ड एज, ऑप्शन है 350, 250, 300, 400. करेक्ट आंसर होगा 350. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ सीमेंट, ऑप्शन है साउंडनेस, स्लम्प, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. करेक्ट आंसर होगा स्लम्प. नेक्स्ट है, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज, ऑप्शन है 1, 7, 5, 10. करेक्ट आंसर होगा 1. द मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम इन मिनट फॉर क्लास A टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज, ऑप्शन है 45, 75, 60, 240. करेक्ट आंसर होगा 45. Roller compacted concrete can be used for which of the following construction? Options है dams, wearing surface of roads, bridge deck slabs, canals. Correct answer होगा dams. The maximum intensity of loading that the function will safely carry without the risk of shear failure of soil irrespective of any settlement that may occur is called as, options है allowable bearing capacity, safe bearing capacity, ultimate bearing capacity, net loading. करेक्ट आंसर होगा safe bearing capacity. नेक्स्ट है, when assessing the strength of a structure or a structural member for the limit a state of collapse, the value of partial safety factor for reinforcing a steel should be less than, options है 1.50, 1, 1.15, 1.25. करेक्ट आंसर होगा 1.15. नेक्स्ट है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक स्टील मेंबर ऑफ लेंथ L in compression having both its ends re-stand is, ऑप्शन से L, 0.8 L, 1.25 L, 0.65 L. करेक्ट आंसर होगा 0.65 L. The maximum permissible limit of chlorides in mg per liter in potable water in absence of an alternate source is, ऑप्शन है 750, 1000, 250, 500. करेक्ट आंसर होगा 1000 mg per liter. नेक्स्ट है, द इमेजिनरी लेवल सरफेस विथ रेफरेंस टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर मेजर्ड इज कॉल्ड एज, ऑप्शन है मीन सी लेवल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, रिड्यूस्ड लेवल, डेटम सरफेस. करेक्ट आंसर होगा डेटम सरफेस. नेक्स्ट है, द सिलेंडरनेस रेशियो हैज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस, ऑप्शन है मीटर इनवर्स, मीटर,
मीटर स्क्वायर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो करेक्ट आंसर होगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी. स्लेंडरनेस रेशियो इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी. According to the limit state theory and as taken by IS 456, the maximum compressive strain in concrete in axial compression is taken as options as 0.00125, 0.002, 0.001, 0.0015. करेक्ट आंसर होगा 0.002. In a standard Proctor test used for developing the moisture density relationship of soil, the weight of hammer used is options है 3 kg, 4.5 kg, 2.25 kg, 2.5 kg. करेक्ट आंसर होगा 2.5 kg. मैक्सिमम pH वैल्यू acceptable for potable water is options है 7, 6.5, 8.5, 8. करेक्ट आंसर होगा 8.5. रेंज क्या होता है 6.5 to 8.5. Which of the following method is not used for measuring in situ density of compacted soil? ऑप्शन है न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, कैसेग्रांडे मेथड. करेक्ट आंसर होगा कैसेग्रांडे मेथड. नेक्स्ट है नॉर्मली द एयर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कंक्रीट आफ्टर फुल कंपैक्शन इज अचीव्ड इज टर्म्ड एज. ऑप्शन है इनकम्प्रेसिबल एयर, इंट्रेंड एयर, कॉम्पैटिबल एयर, इंट्रैप्ड एयर. करेक्ट आंसर होगा इंट्रैप्ड एयर. द एरिया अंडर अ स्ट्रेस सस्टेन कर्व फॉर अ मटेरियल इज यूजुअली यूज्ड टू एस्टिमेट द. करेक्ट आंसर होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू cause a failure. When corrosion of a steel embedded in concrete take place, the volume of rust is usually P times that of the original volume of a steel, where P is option is 4 to 9, 0.5 to 1, 1 to 1.5, 2 to 4. करेक्ट आंसर होगा 2 to 4. An RCC column will be considered as cylinder when the ratio of effective length to depth ratio is. Correct answer होगा 12 and effective length to width ratio is also 12. On a contour map, curves that are more or less equally spaced depict. Options है uniform slope, a valley, a steep slope, vertical slope. करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म स्लोप. द वाटर फॉर्मेशन दैट आर impermeable and contain water but are not capable of transmitting a significant quantity are called as. तो आंसर हो जाएगा एक्विक लोड. स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. A potential degradation of a concrete can happen if the alkaline present in the cement react with. Correct answer है silica present in aggregates. Abrasion resistance of mineral aggregate used for concrete making is usually measured using which of the following test measured? Correct answer होगा लॉस एंजल. नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप इज सुटेबल फॉर वेल प्लान्ड रोड एंड एस्टेट इज सर्कुलर मेथड. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर कंडीशन will a structural steel element can be classified when exposed to corrosive fumes? Correct answer होगा very severe. Which of the following is not a temporary adjustment of
compass used for land surveying. Options है focusing the prism, making the pivot exactly vertically over the ground station mark, center of pivot coincide with geometrical center of graduated leveling. करेक्ट आंसर होगा थर्ड. In a non-cellular, non-ripped flat slab, the spacing of reinforcing wall shall be limited to maximum of m times the thickness of slab, where m is options are 2.50 to 1.501. करेक्ट आंसर होगा 2. If a surveying drawing is prepared at a scale of 1 centimeter is equal to 4 meter, then what will be fractional scale? Fractional scale 1 centimeter is equal to 4 meter, 1 is to 400. करेक्ट आंसर है 1 is to 400. Rank the following for usual ranges of hydraulic conductivity in decreasing order. करेक्ट आंसर हो जाएगा 3. A propped cantilever beam of a span L, when loaded with a uniform distributed load of intensity P, will have a bending moment M at the fixed end, where M is. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका WL²/8. Which of the following is not a method of balancing consecutive coordinates of a theodolite survey? Options है axis method, Bodice method, Simpson methods, transit rule method. करेक्ट आंसर होगा Simpson methods. A rectangular bar is subjected to torsion. What will be the location of maximum shear stress? करेक्ट आंसर होगा middle of the longer side. Next है which of the following method is suitable for plane table surveying a township where clearing and rear and distant views are seldom available? करेक्ट आंसर होगा traversing method. The average net mass of cement per bag in India is, आंसर है 50 kg. As the water to cement ratio increases, the flexural strength of concrete. करेक्ट आंसर है decreases. Observation of hydraulic jump were made and it was observed that sequence depth ratio is 5. The jump can be classified as options are strong, steady, oscillating, weak jump. करेक्ट आंसर होगा oscillating. As per the terminology used for timber, the angle between the faces of the cutter and the line joining the cutting edge to the center of block is called as, करेक्ट आंसर होगा cutting angle. If BOD in the beginning and in the end of test are respectively 13 and 8 ppm, if the dilution factor is 100, then the 5 days BOD in ppm will be, so we know BOD is equal to 13 minus 8 into dilution factor 100. 500 is our correct answer. C. Next है the estimated value of elastic modulus for concrete of M65 grade as per IS 456 would be approximately, तो EC is equal to
5000 अंडर रूट एफ सी के, वेयर एफ सी के इज इक्वल टू 65। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40।